सारे complaints नहीं होंगे because we are in the studio and we have all the required things जो हमें बड़ा सा board and I'll explain to you a lot of things on this. So without wasting, before that, can you hear me properly and can you see me properly? Proper है. Good. So we will start from where we ended yesterday, and I'll give you a quick revision of what I said yesterday. Okay. So थोड़ा सा आपको एक quick revision दे देता हूँ. So the first thing, most important thing is the formula future plus put is equal to strike plus call. Okay. Once you have understood this, and then if I just write down all the strike prices, let's say 19,800, 19,900, 20,000, 20,100. और ये साइड पे if I write 19,700, 19,600, 19,500. If the call price is the future is trading exactly at 19,800 only. Okay. अगर 19,800 पे ही आपका is there a problem? Hello? No. So is it low volume or is it you can't hear me at all? Okay. Now is it okay? Cool. So we are talking that if the future is exactly at 19,800, then if the call price is 120, the put price will be 120 based on this formula. Okay, because future and strike is the same 19,800, then the put and the call has to be the same. So it will be 120. Okay, if the call over here is, let's say, 80 rupees, the put will be 180. You can put the check it in the formula. Okay, this put will become 180. And if this call is, let's say, 50, this put will be 250. If this call is, let's say, 30, this put will be 330. In the same way, if this put is, let's say, 90, this call will be 190. If this put is equal to 70, this call will be 270. And if this put is, let's say, 55, this call will be 355. Okay. Now I got these prices from this formula. Okay. लेकिन मेरा जो assumptions था वो ये था, correct? So ये जो था वो मेरा assumption था, ये था वो मेरा assumption था, ये मेरा assumption है, ये मेरा assumption है. This is my assumption, this is my assumption, and this is my assumption. Correct? If I know this, I can know this. 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 Question है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया. And therefore, if we just analyze अभी तक जो हो रहा है,
in the market. Okay, and if I just plot these ones जो मैंने underline किया है, okay, I will get something like this. Okay, so if this is your graph paper and this is the price, okay, तो ये 120 का जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, ये 90 का है वो यहाँ पे होगा, 70 यहाँ पे होगा, 55 यहाँ पे होगा. When you plot that, तो आपको ये ऐसा कर्वेचर मिलेगा. अगर मैं ये सबको प्लॉट करूं 80, 50, 30, तो इस तरह से नीचे मिलेगा. ये भी कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है. ओके, हाउएवर दोनों का जो ग्रेडियंट बोलते हैं वो थोड़ा अलग अलग है. सो इट इज नॉट कि दोनों ही एग्जैक्टली सिमिलर वे में स्टीपनेस दिखाएंगे, बट इसी तरह से कुछ होगा. नाउ आई एम क्लियरिंग दिस. जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको मैं निकाल रहा हूं, बिकॉज वी आर हियर ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइम वैल्यू. Okay, so we are not even talking about whether this is a call or a put. Okay, इसका टाइम वैल्यूज में लिख रहा हूं. ओके, सो ये जो टाइम वैल्यूज होता है वो पर स्ट्राइक के हिसाब से होता है. ओके, ये स्ट्राइक प्राइस पे कितना टाइम वैल्यू है, ये स्ट्राइक प्राइस पे कितना टाइम वैल्यू है, ये स्ट्राइक प्राइस पे कितना टाइम वैल्यू, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द थ्री फैक्टर्स जो हमने कल डिस्कस किए थे. आई एम जस्ट रिपीटिंग दोस थ्री फैक्टर्स. ओके, सो द पहला जो फैक्टर होता है जो हमारे ऑप्शन प्राइस को इंपैक्ट करता है वो होता है टाइम. करेक्ट. सो टाइम किस तरह से गिना जाता है, दिन का. वैसे तो एक एक मिनट पे भी गिन सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैलेंडर डेज ही गिनते हैं. ओके, वी हैड डिस्कस दैट इन द बेसिक कोर्स व्हाई वी टेक इट एज कैलेंडर डेज. ओके, सो अगर यहाँ पे लेट्स से 5 डेज का आपका एक्सपायरी है एंड लेट्स से दिस इज द 5th डे. ओके, सो दिस इज द 5th डे, मतलब 5 दिन बाकी है अभी. एंड देन if I have a 4th day, so and if I assume कि मार्केट इधर का इधर ही रहेगा. Okay, so no change in the market movement, no change in the volatility. No change in volatility हुआ मतलब कि ये जो कर्वेचर है वो सेम ही रहेगा. So this price will come down like this. All your option prices, be it call or be it put, सबके सब नीचे आ जाएंगे, because one day is gone. So this is the 4th day, 4 days left to expire. So ये 120 वाला let's say 116 हो जाएगा, 90 वाला 84 हो जाएगा, 70 वाला 67 हो जाएगा, 55 वाला 53 हो जाएगा. ओके, तो ये सब के सब गिरेंगे. So when you have the price on this, you also need to have a zero line, right? So this is your zero line. Now the next day, अगर मार्केट उधर का उधर ही रहता है, तो this price will come further down. Okay. Now there are only 3 days left. अगर 2 days ही बाकी रह गए तो ये इस तरह से कुछ आएगा. And if there is only 1 day left, तब तक सब कुछ almost zero हो चुका होगा. And on the last day at 3:30, you will find that all the prices will come down to zero. All your time values will come down to zero. What will still remain is your intrinsic value. Okay, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पहले दिन भी रहेगा, लास्ट दिन भी रहेगा, अगर मार्केट मूव नहीं किया तो. सो
यहाँ पे in this call there was 100 rupees intrinsic value. अगर लास्ट दिन को 19700 का कॉल देखोगे तो 100 रुपीज होगा क्योंकि टाइम वैल्यू जीरो हो गया. दिस 90 रुपीज बिकेम जीरो. तो अभी जो 190 रुपीज था ये कॉल था, on the last day if the market remains exactly where it is, this call will give you only 100 rupees. तो 90 रुपीज कहाँ गया? 90 रुपीज जीरो हो गया, 100 रुपीज बच जाएगा. सो वो 100 रुपीज तो इंट्रिंसिक है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो आज देखोगे तो भी 100 रुपीज इंट्रिंसिक है, लास्ट दिन को देखोगे तो भी 100 रुपीज इंट्रिंसिक है. सो इंट्रिंसिक आपको मिलेगा, लेकिन टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा. ओके, सो जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका प्रीमियम मेल्ट डाउन होते जाएगा. ओके, एंड दिस इज द वे इट विल मेल्ट डाउन. ओके, मैं तीनों फैक्टर्स को बाद में कंबाइन करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी I want you to understand it step by step. Okay, so when we combine all the three, it will look much chaotic figure. इसीलिए I'm not doing it right now. Okay, but as of now, just understand that if the market is not moving at all, this is the way it will diminish. Okay, everybody understood till here? Can you just give me a thumbs up if you have understood? Sure, ये कल किया था. We are just doing a revision. Okay, fantastic. So उसके बाद मैंने आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया था about the market remaining there and at 9 o'clock there is some news, correct? And उसके वजह से volatility बढ़ जाता है and उसके बाद volatility कम हो जाता है. So I'll just repeat the same example in case you could not understand it last evening. So this is your normal curve. Okay, ये exactly ऐसा है अभी. अब tomorrow we are expecting that the market should be somewhere over here. Because the market is not moving anywhere, right? So कल हमारा गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं हो रहा है, जहां पे मार्केट वहीं पे खुलने वाला है. So obviously one day जाएगा तो ये प्रीमियम कम हो जाएगा एक दिन की वजह से. But at 9 o'clock there is some news of maybe somebody is announcing something. Okay, I don't want to repeat the same joke, but अगर कुछ uncertainty वाला event आ गया तो you will see that the premiums instead of going down they go up, and also this curvature, okay, compared to this changes. This curvature and this curvature may change. Okay, so ये हो गया impact of that uncertain event, which means okay, volatility बढ़ गया. Okay, so volatility has increased. So what actually happened was कि जो टाइम ने जो काम किया था वो तो उसने किया. So टाइम ने अपना काम किया by reducing this price till here. Okay, टाइम ने अपना काम किया reducing this price, लेकिन volatility ने इसको प्राइस को ऊपर लेके गया. And therefore when you look at the price, you see that the price is actually 127. तो आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो गया? एक दिन चला गया, मार्केट उधर का उधर है, फिर भी प्राइस ऊपर है. Now this is not a negative news or a positive news. Please, नेगेटिव न्यूज तो आया ही नहीं है. न्यूज तो 10:15 बजे आएगा. We are only at 9:15 right now. Okay, we don't know what will be the event, but before the event, all the prices, be it call or be it put, prices will increase. Okay, this is the impact of uncertain events, and therefore the volatility increases.
Volatility increase का मतलब the demand for options will increase on both sides. क्योंकि time values will increase. Okay. अब मैं बोलूं कि यहाँ का time value of this put will increase. हाँ, तो इसका कॉल का प्राइस इंक्रीज नहीं होगा. Obviously होगा. If this 90 becomes 95, wouldn't this call become 190 से 195? It has to. It will be automatically. अगर ये change होगा तो ये change होगा ही होगा. Right? So when you look at the volatility, if the volatility is changing, it will be changing the premium on calls and puts. Okay? तो यहाँ पे भी आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ पे भी आपको ऊपर दिखेगा. So look at the option prices before an event. Let's say before a budget, or maybe tomorrow, day after tomorrow, we have the Fed prices, decision. Okay. So obviously that is a macro level event. A वो macro level event, even though that would be more discounted because वो general economics है, but अगर वो ऐसा uncertain event होता, तो you would have seen कि ये सब prices ऊपर भाग जाते हैं. Okay. Be it call or be it put. If the volatility had gone down, okay, if the volatility had gone down, you would have seen that the prices, instead of being this, they would have fallen down further. So instead of being over here, it would be over here. Okay. So this is how the option volatility will change your option price. Okay. Time can only bring the option price down because time can only be less. Okay, time to left to expiry can only decrease. इसीलिए premiums can only decrease, but volatility can increase or it can decrease. Okay, and that can change the option price in a drastic way. And this is what the problem is, and that is why it is very difficult to actually gauge the option prices. So I'll show you what happens actually. So ideally, what happens is कि जब भी अगर मैं टाइम को प्लॉट करूं, टाइम का इम्पैक्ट अगर मैंने ऑप्शंस का जो टाइम का इम्पैक्ट है ऑप्शन प्राइस के ऊपर, if I plot this, let's say this is price of 120 and there are 30 days, sorry, let's say 30 days left. Okay, अभी 30 days का 120 रहा नहीं है, but 30 days left, and this is your 0th day. Okay. Ideally, this price will come down like this in a smooth curve sloping downwards, right? But what happens is that because the volatility एक दिन ऊपर जा सकता है, एक दिन नीचे जा सकता है, लास्ट दिन को टाइम वैल्यू 0 आ जाएगा. ओके, बट इसका क्या पाथ होगा वो अपने को पता नहीं. So ideally, what I was trying to say is कि अगर ये मेरा एक दिन है, so I was showing you 5 days, right? So let's say this is the 5th day. Okay, यहाँ पे 5 days left to expiry. Now, when there are 4 days left to expiry, the premium can go here also. Then there is 3 days left to expiry, so वो इधर आ जाएगा. Then there are 2 days left to expiry, so वो इधर आ जाएगा. Then there is 1 day left to expiry, so वो इधर आ जाएगा. This is 1. So ये 5 4 3 2 1 जो एक सीरीज में होना चाहिए, what has happened is कि 4th डे को वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया, इसलिए प्राइस ऊपर चला गया. देन 3rd डे को वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा गिर गया. ओके, सो इस बहुत नीचे आ गया. फिर सेकंड जब 2 days लेफ्ट टू एक्सपायरी,
तो ऊपर आ गया. Then 1 day left to expiry, बहुत ज्यादा गिर गया. So this actually went from here to here, then to here, then to here, and then to here. Exactly what I just showed you over here in a horizontal way. तो ये जो है प्रीमियम्स, वो क्या हो जाएगा वो अपने को पता नहीं चलता. And this is the problem because of which it is very difficult to trade on this day and get out on this day. अगर आपको 2 दिन में ही एग्जिट करना है, ओके, तो आप सोचोगे कि देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, करेक्ट, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो 2 दिन के बाद प्रीमियम गिर जाएगा, लेकिन प्रीमियम इसके भी ऊपर चला गया. Now how will you make any logic? Ideally the premium should go down, right? लेकिन ऊपर चला गया. अब आपने यहाँ पे कुछ स्टार्ट किया था, ओके, अभी तो एक्सपायरी को इतना दिन बाकी है, अभी तो 30 से 29 डेज 28 डेज हुआ है, फिर भी इतना दिन बाकी है, लेकिन आप अगर इस दिन को एग्जिट करने जाओगे तो आपका प्रीमियम तो यहाँ पे आ गया. तो यहाँ से यहाँ प्रीमियम एक ही दिन में या 2 दिन में इतना गिर गया, एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड क्या हो गया बॉस, 2 दिन में मेरा प्रीमियम इतना क्यों गिर गया. ओके, बिकॉज वोलेटिलिटी डिक्रीज. तो ये वोलेटिलिटी डिक्रीज कब होगा, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, अपने को नहीं पता चलेगा. बट इतना श्योर है कि लास्ट दिन को जब टाइम खत्म तो प्रीमियम खत्म, टाइम वैल्यू खत्म. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए all the books that you open, okay, all the books that you can open, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रेटजीज ही सिखा सकता है. Nobody can teach you can do it on this day and exit on this day. What will be the price? What will be the profit? Nobody knows क्योंकि volatility कहाँ होगा किसको पता. Okay, so it is easy to explain this payoff because यहाँ पे क्या रहेगा, या तो जीरो होगा या तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा. Correct? There is no time value left. But when intra period, there is what is the time value left? We don't know. Until the last day, there will be some time value left. Okay. So ये time value कितना होगा? We don't know. And that is what makes options complicated. And when, if you have experienced in trading, when you see this kind of a fall in an option, when there are so many days left, आप लोगों को शॉक लग जाता है कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों मेरा प्रीमियम गिर गया. एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड एंड देन दे क्लोज द चैप्टर कि भाई ऑप्शंस करना ही है. राइट, सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पाथ. लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, वो कोई ऐसा नहीं कि एडवांस कोर्स करूंगा तो ये बात समझ में आ जाएगा. अगर वो होता तो मैं आपको समझा दिया होता. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस पाथ. ओके, फाइन. Now the third factor is the market movement. Okay, and that for that I had yesterday I had kept it incomplete. Today we will try to complete it. I'll write it again only. So it is at 19,800. 19,900, 20,000, 20,100, 19,700, 19,600, 5. इसका कॉल का प्राइस इज 120, इसका पुट का प्राइस इज 120. यहाँ पे टाइम वैल्यू इज, लेट्स से इसका कॉल का प्राइस इज 80, इसका पुट का प्राइस इज 180, इसका कॉल का प्राइस इज 50, पुट का प्राइस इज 250, इसका कॉल प्राइस इज 30, इसका पुट इज 330. This put is, let's say, 90. This call is 190. This put is, let's say, 70. This call will be 270.
this put is 55, this call will be 355. Okay. That means we have to find out maximum loss during this intra period. By this, we can limit our loss. Please hold on. That is only due to volatility. अब जो third factor है, उससे भी तो आपको loss हो सकता है ना. So let's complete this and then we will look at it. Okay? So I'll just draw this over here. Now we are assuming that the market is exactly at 19,800. The future is at 19,800. Okay. Now I have to just change the market. Okay. मैं टाइम को कांस्टेंट रखूंगा, मैं वोलेटिलिटी को कांस्टेंट रखूंगा, तभी जाके जो भी इंपैक्ट आएगा वो मार्केट के मूवमेंट की वजह से आएगा. ओके. सो मार्केट के मूवमेंट की वजह से if I just want to see क्या होगा, and I just need to move the market to 19,900. Okay. So जैसे ही 19,900 का मूवमेंट आ गया, then you will see that this peak comes over here. Okay, and this starts from here. Okay, so market यहां से यहां आ गया, तो सारे कॉल के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, सारे पुट के प्राइसेस नीचे चले जाएंगे. Do you understand this? So यहाँ का जो कॉल था, this is now from 80, it has gone to 120. तो कॉल का प्राइस 120 हो गया, राइट. ये जो कॉल है ये हो गया 80 रुपीज, ये जो कॉल है वो 30 रुपीज से हो गया 50 रुपीज. तो ये पहले 30 था और 50 हो गया, ये पहले 50 था वो 80 हो गया, राइट. ऑन दिस साइड ये जो 90 था वो हो गया 70, ये जो 70 था वो हो गया 55. ओके, और ये जो 55 उसके आगे जो भी होगा वो 55 था वो लेट्स से 40 होगा. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऑल द कॉल प्राइसेस इंक्रीज्ड, ऑल द पुट प्राइसेस डिक्रीज्ड. तो ये जो टाइम वैल्यूज, ओके, टाइम वैल्यूज ऑफ दीज स्ट्राइक्स हैव चेंज्ड. तो ये 80 का टाइम वैल्यू 120 हो गया, 50 का टाइम वैल्यू 80 हो गया, 30 का टाइम वैल्यू 50 हो गया. यहाँ पे जो पुट का 19,700 का जो टाइम वैल्यू 90 था वो 70 हो गया, 19,600 का 70 था वो 55 हो गया, 19,500 का टाइम वैल्यू 40 हो गया, 19,800 का टाइम वैल्यू क्या हो गया अभी, दिस नंबर, राइट. सो ये जो 120 था वो अब 90 हो गया. So the put value is 90. Okay. तो कॉल वैल्यू क्या हो गया, the new call value when the market has moved this, ये कॉल का क्या हो जाएगा, ये 120 से कितना हो जाएगा. Now the new time value at 19,800 is 90, and now this 19,800 strike price call has 100 rupees intrinsic value. Therefore, this will become 190. अब समझ में आया कि ये जो कॉल है, ये जो कॉल है वो 120 से 190 हो जाएगा. Now comes the question कि ये 120 से 190 क्यों हुआ. ये 120 से 190 इसलिए हुआ क्योंकि when the market moved from this point to this point, we are talking about this call. Okay, when the market moved 100 points, the call had a positive 100 points intrinsic value.
it lost 30 points on the time value. पहले ये स्ट्राइक पे 120 रुपया का टाइम वैल्यू था and now it is 90. Okay, so 30 rupees is the loss of time value. And therefore, net profit should be 70 rupees. Calculate 120 से 190, 70 rupees मिला. 120 से 190, 70 रुपीज मिला, राइट? क्यों? क्योंकि 100 रुपीज इंट्रिंसिक मिला, लेकिन 30 रुपीज टाइम वैल्यू ने लॉस कर दिया. I had explained to you in the synthetics what a call is. It is nothing but a future plus put, right? So future ने 100 रुपया कमाया, लेकिन पुट ने 30 रुपीज लॉस कर दिया, इसीलिए नेट 70 रुपीज ही मिला. This is the same explanation, but in a different way. So call is nothing but a future plus put, right? So future ने 100 रुपया कमाया and 30 rupees इसने loss कर दिया. So now what you have is that the call premium has gone to 190. Okay. Now let's assume कि अपना जो मार्केट है, it goes up to 20,000 immediately. अगर immediately 20,000 चला जाएगा तो क्या होगा? ये जो पीक है वो यहाँ पे आ जाएगा, correct? And then this is how the time values will look. Correct? So अब क्या होगा? Let's put the prices. So ये जो 50 का था वो 80 हो गया था, लेकिन अब वो 120 हो गया यहाँ पे. This call which was 30 became 50, now it is 80. Correct? यहाँ पे जो पुट था वो 120 से, सॉरी इसका जो पुट था वो तो हमने कम कर दिया था, but let's count from here. So ये 55 से 40 हो गया था, ये अभी कुछ 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 70. करेक्ट? सो पहले वो 120 था, फिर 90 हो गया, अब वो 70 हो गया. करेक्ट? नाउ प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग नाउ. Now the new put price of this strike price, okay, where should I write this? The new put price is equal to 70. So the call price will be how much? Call price will be 270. करेक्ट? क्योंकि आपका कॉल 19,800 का है और मार्केट पहुंच गया 20,000, तो 200 रुपए इंट्रिंसिक प्लस द न्यू टाइम वैल्यू व्हिच इज 70. सो द कॉल विल बिकम 270. करेक्ट? अब देखो इसमें क्या हुआ. पहले ये 120 था, ओके, दिस कॉल वाज 120. Now this call has 200 points intrinsic value, okay, but 120 से 70 हो गया तो 50 रुपया लॉस कर दिया उसने टाइम वैल्यू में, राइट? सो intrinsic value is equal to plus 200, yeah, but time value loss minus 50. इसीलिए नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो पॉजिटिव 150. देख लो 120 का 270 हो गया, 150 का प्रॉफिट हो रहा है. क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है कि whenever there is intrinsic value का प्रॉफिट, time value has to make a loss.
करेक्ट. नाउ पे अटेंशन टू दिस. अब आपका जिन लोगों को भी वो गामा का क्वेश्चन था, ओके, नाउ इट विल आंसर इट. 120 का फॉर द फर्स्ट 100 पॉइंट्स कॉल का प्राइस हो गया 190. ओके, सो पहले जो 120 था वहां से हो गया 190. ओके, मार्केट क्या था? 19800 था, उसका हो गया 19900. राइट. तो यहां पे 100 रुपया ऊपर गया, तो कॉल का प्राइस कितने से ऊपर गया? 70 से. राइट. सो कैन आई से दैट माय डेल्टा is equal to 0.7? Can I say my delta is 0.7? Yeah. क्योंकि 100 रुपीज अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 70 रुपीज आपका कॉल कमाता है, तो डेल्टा इज 0.7. ओके, अब यहां से मार्केट जाता है 220,000. करेक्ट. और ये हो जाता है 270. करेक्ट. तो यहां पे भी तो 100 पॉइंट्स बढ़ा, यहां से यहां इंक्रीमेंटल 100 पॉइंट्स बढ़ा, तो ये 1 से 190 का 70 पॉइंट्स ऐड करता तो 260 होता ना. लेकिन यहां पे तो 80 पॉइंट्स से बढ़ा मार्केट, मतलब आपका कॉल 80 पॉइंट्स से चेंज हो गया. ऐसा क्यों? 190 से 270 क्यों हो गया? 80 पॉइंट से क्यों बढ़ा? जब डेल्टा 0.7 का है तो 100 पॉइंट के लिए 70, तो 200 पॉइंट के लिए 140. करेक्ट. सो अगर 100 पॉइंट्स के लिए 70 पॉइंट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा. राइट. कि अगर डेल्टा इज 0.7 तो 100 पॉइंट्स के लिए 70 रुपीज, तो 200 पॉइंट्स के लिए 140 होना चाहिए. लेकिन यहां पे तो इफ यू लुक एट दिस, इट इज 150 पॉइंट्स. तो ये क्यों 150 हो गया? So is my delta not correct? Delta is correct, but understand this very clearly now. Okay, all of you, please very clearly understand this. अगर if this curvature was a straight line on this side also, if it was a straight line, okay, तो यहां पे if this is 120, यहां से यहां का डिफरेंस कितना होगा? अगर 40 रुपए अलग से 30 रुपीज है तो ये 90 रुपीज होता. यहां से यहां डिफरेंस कितना होना चाहिए? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इधर से इधर जितना डिफरेंस इतना ही इतना डिफरेंस होगा, तो दिस वुड बी 60. करेक्ट. दिस शुड बी 60, बट इट इज नॉट 60. एंड देयरफॉर अगर 100 पॉइंट्स ऊपर जाता तो ये 30 पॉइंट्स टाइम वैल्यू लूज करता. ओके, दैट मींस कि जब ये यहां पे आता तो ये इस तरह से होता, एंड देन व्हेन इट वेंट टू दिस पॉइंट वो इस तरह से आता. करेक्ट. सो यहां से यहां जितना नीचे गिरता यहीं उतना ही नीचे गिरता. सो यहां भी -30 होता, यहां पे भी -30 होता. देन देयर वाज नो प्रॉब्लम. बट this is not the case. Okay, मार्केट्स में जब ऑप्शन प्राइसेस देखोगे तो इट इज अ कर्वेचर.
It is not a straight line. It is a curvature. And therefore, the difference between these two is not the same as these two. Okay? यहाँ पे अगर 30 रुपीज का डिफरेंस है तो ये जो है वो 70 का प्राइस है. So यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस. This is the reason why we need to incorporate another derivative called the gamma. And therefore, this was not the delta to begin with. Okay? This was not the delta to begin with. The delta was, let's say, 0.6. The gamma was 0.001. So जब तक ये 100 points आता है, so this delta, the new delta is automatically 0.7. The gamma is, let's say, 0.001. When it comes over here, it increases by 80 points. Is this understood? Gamma क्यों चाहिए पहले तो? Why do we need gamma? Gamma keeps changing the delta. इतना समझ में आया था, लेकिन क्यों? It is because this is not a straight line, it is a curvature. This is not the same, it is minus 20 only. So when this changes, the other things will also change. And to incorporate this, we need to use the gamma. Okay. So let's see, agar I'll just take an example. अभी 19,800 है, ओके, एंड ये इस तरह से कुछ स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज योर जीरो लाइन. ऑब्वियसली ये 19,900 होगा, ये 20,000 होगा. ओके, दिस strike would be, let's say, somewhere around 20,800. उस पे प्रीमियम कितना होगा? हार्डली 1 रुपया होगा, 1 रुपया भी नहीं होगा. So when this is 120, this would be hardly 1 rupee. Okay. Now, for some reason, if the market keeps on going up and up and up and up and up, there is no change in the time. एक ही दिन में अगर मार्केट 19,800 से 20,700 चला जाएगा, if the market moves up to 20,700, this peak might come here, assuming no change in the volatility. Correct? So now, this will be the new graph. Correct? अब इसका टाइम वैल्यू क्या है? It is almost near to zero. So let's say this call was 120. Okay? अब ये जो टाइम वैल्यू है यहाँ पे, it is 1 rupee. So the time value is 1 rupee. तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहाँ का इंट्रिंसिक वैल्यू पूरा मिल गया होगा. The time value is पूरा लॉस. करेक्ट? So 19,800 से 2,700, which is intrinsic value का positive 900 rupees, but time value loss is equal to minus 120 rupees. I am assuming कि ये 1 rupee नहीं है, ये 0 है. Let's say 119. करेक्ट? क्योंकि 1 रुपये टाइम वैल्यू बचा है. सो 120 का 1 रुपये हो गया टाइम वैल्यू. सो नाउ दिस प्रीमियम, द कॉल वैल्यू is going to be what? 7
781. सो कॉल हो गया आपका 781. सो 120 से लेके 781 हो गया आपका कॉल का वैल्यू. करेक्ट. बिकॉज 900 रुपीज इंट्रिंसिक आ गया. आज का आज ही हुआ है. सो वी आर नॉट ब्रिंगिंग दिस पीक डाउन. ओके. आज का आज ही है, इसलिए यहाँ पे 120 हो गया. यहाँ पे जो टाइम वैल्यू था वो 1 हो गया. सो नाउ द टाइम वैल्यू loss is 119, but you have intrinsic profit of 900 rupees. Okay, and therefore you get this call price as 781. Correct. Now अगर यहां से यहां और एक 100 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है इमीडिएटली, तो ये जो पीक है वो यहां पे आ जाएगा. करेक्ट. अब इधर लॉस करने को जगह ही कितना है. This time value, the new time value, instead of 1 it will be, let's say, 0.5. और क्या होगा, माइनस में तो नहीं जा सकता ना. But now what has happened is the intrinsic value has increased by 1000 points, but the time value has decreased by 119.5. Correct. And if you see the new call price, it will be 880.5. For the incremental 100 points, you are getting almost 100 points. That means your call is now working like a future. Why is the call working like a future? Because इसके अंदर टाइम वैल्यू में लॉस करने का जगह ही नहीं है. तो जो भी फ्यूचर कमाएगा वो आपको एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा. Correct. So this is why when you have an extremely in the money option, it will start working like a future, because इसमें टाइम वैल्यू लॉस करने का जगह ही किधर है. ओके. Fine. So now do you understand why we use delta and gamma? So when you start at the money, the delta is somewhere around 0.5. As it becomes in the money, the gamma keeps on changing it, and max it can changes to 1. Okay. 0.5 से चेंज होते 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 1 हो जाएगा. Now 1 का मतलब क्या है? It will start working like the future. That is the meaning of 1. Okay, 1 rupee increase of the underlying, 1 rupee increase of the call price. This is what the delta means. Delta of 1 means. Correct. So this is why, okay, this is why we need to understand there is one more factor called gamma. This is what keeps increasing this delta. Okay. अब बोलो, समझ में आया? Now we will combine all the 3 factors together. Okay. ये तो खाली मूवमेंट का था. अब हम तीनों को कंबाइन करते हैं. So let's say the market is at 19,800, 19,900, 20,000, 20,100, 19,700, 19,600, 19,500. Okay. Now, pay attention to this. This is day 1. Okay.
let's say this call price is 120, the put price is 120. Okay. This call price is 80, this put price is 180. Okay. Now you have a bullish view. Okay. आपका व्यू है bullish. So when you have a bullish view, you bought a call. यहाँ था. Okay, you bought a call. Now, अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यहां से यहां आ जाएगा. Correct? This 80 will become 120. Up, you are happy. However, अगर ये जो आपका व्यू है वो 4 दिन के बाद राइट होता है, तो मार्केट ऊपर जाता है लेकिन 4 दिन के बाद जाता है, तो 4 दिन तक मार्केट ऑलमोस्ट उतने में ही घूमते रहता है. सो इट गोज टू 19,820 ऑन डे 1, लेकिन टाइम तो खत्म हो गया था. सो ये इधर 1 2 3 4 4 दिन गया, लेकिन ये कहां पे होगा? यहां पे होगा, बिकॉज 19,820 है. ओके, सो मार्केट 19,820, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. सो 19,800 was on the first day, then it went to 19,820 on the second day, then it went to 19,770 on the third day, then it came back to 19,800 on the third day, then it went to 19,830 on the fourth day. तो पहले 19,820 आएगा, तो ये पीक जो है वो यहां से स्टार्ट होएगा. दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा घूमेगा. फिर वो 19,770 आ गया, तो ये पीक इधर कहीं पे आ जाएगा ऑन द थर्ड डे. ये इधर से ऐसे ही कुछ जाएगा. फिर 19,800 आ गया, तो ये इधर से स्टार्ट होएगा. फिर 19,830, तो ये इधर से स्टार्ट होएगा. And then it goes to 19,900. Okay. Then on the fifth day it goes to 19,900. Okay. तो क्या होगा? So this was the peaks. Okay. एक दिन इधर से स्टार्ट हुआ, एक दिन इधर से, चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, अब पांचवें दिन इधर आ गया. पांचवें दिन it has come to 19,900, right? Your view is correct. You had thought कि मार्केट ऊपर जाएगा and it came up, but वो टाइम तक because मार्केट में कोई वोलाटिलिटी नहीं था, वोलाटिलिटी गिर गया. So ideally this peak should be somewhere over here, but volatility भी गिर गया, so the peak is over here, and from here if it starts, so are you making money? This would be, let's say, somewhere around 40 rupees. आपका व्यू राइट है. Your view was right, the market will go up, it went up. But did you make money? No. 4 दिन चला गया, वोलेटिलिटी 1% गिर गया, तो आपका प्रीमियम यहां से स्टार्ट होगा.
So if your view was right on the first day itself, आपको प्रॉफिट होता. Yes, you were right. आपको काफी लोग बोलते हैं ना कि if you think the market will go up, buy call. It is for this कि अगर आज का आज ऊपर गया तो you buy call. अगर 4 दिन के बाद गया, volatility गिर गया, तो even if you have bought a call, you will not make any money. समझ में आ रहा है? So because it has no volatility, it does not lose money, but it loses because of volatility and time. क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया ना, आपका व्यू था ना कि मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर गया. कोई स्टॉक लिया होता, हाँ, if you had bought a stock and if after 5 days it goes up, you don't get money. What? You get money, no? But in this you don't. In this you don't. You have to be very clear and correct about the time of your target also. And that is why यहाँ पे आपको शायद लॉस होगा. Now, अभी खत्म नहीं हुआ है स्टोरी, 5 दिन ही गया है ना. Let's say after on the same day, instead of market going up by 100 points, it goes up by 200 points. क्योंकि आपका व्यू तो बुलिश था. अभी कितना पॉइंट से बुलिश ये तो आपने बोला नहीं था. आपने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया, it went to this point, 20,000 हो गया. So this peak will start over here, correct? And now you will have something like this. So yes, ये जो नया टाइम वैल्यू है, ओके, ये जो नया टाइम वैल्यू है वो लेट्स से 30 रुपीज हो गया. टाइम वैल्यू गिर गया, लेकिन अब ये कॉल के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया ना. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ हाउ मच? 100 points. So now this call will be 100 rupees intrinsic plus 30 rupees time value, so 130 rupees. Now this call is 130 rupees. अगर ये 130 rupees है तो आपको प्रॉफिट है ना. 80 rupees में बाय किया था, 130 हो गया. हाँ, प्रॉफिट है, बच गए. प्रॉफिट है, बच गए. बट अंडरस्टैंड दिस, अगर वो जब आपने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा और उसी दिन गया होता, तो ये पीक यहां से स्टार्ट होता एंड 100 रुपीज इंट्रिंसिक तो मिलता ही, लेकिन इसका जो टाइम वैल्यू है, लेट्स से इट वुड बी समवेयर अराउंड 60 रुपीज. तो आपका कॉल कितना होता? 100 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड 60 रुपीज टाइम वैल्यू, तो 160 होता. अगर आप आज के आज राइट जाते, फ्रॉम द डे यू बिगेन, वही दिन अगर राइट चले जाते तो यू वुड हैव गॉट 160. बट बिकॉज यू आर राइट आफ्टर 4 days and the volatility going down and then you are right, you are getting 130. लेकिन ये किसी को समझ में ही नहीं आता है. 80 से 130 गया ना, बहुत है अपने लिए, बट 80 का 160 होना चाहिए था and you have lost that 30 rupees due to the time value or due to the volatility or due to time. ये किसी को समझ में नहीं आता. प्रॉफिट में लॉस है ना, ठीक है, nobody cares, but you should understand what is happening to you. And when you take a view, not only the direction, but in how many days, and if possible, what will be the volatility at that time. These are the 3 things you have to combine to be very clear about what will be your option price on the whenever the target is achieved. I have not read any comments at all. Okay, I have not read any comments at all. Please excuse me for that.
because I was totally into this. This is how your options premium works. अब मैं सीधा सीधा इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं, या फिर मैं इसके अंदर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा डाल डाल के ये सेम चीज एक्सप्लेन कर सकता हूं. इट विल बी द सेम. इट इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड कैलकुलेटिंग इट. अपने ऑप्शंस कैलकुलेटर हम आपको दिखाएंगे आफ्टर सम टाइम. सो ऑप्शंस कैलकुलेटर आपको दिखा देगा कि ये कितना इंपैक्ट करेगा. ये प्राइस अगर आज से बढ़ गया तो ये 160 हो जाएगा, अगर 4 दिन के बाद गया तो 130 हो जाएगा. ऑल दीज थिंग्स सिंपली कैलकुलेटर दिखा देगा, आपको नंबर दिखा देगा, आपको मानना पड़ेगा. यू शुड नो व्हाट इज द फंडा बिहाइंड दिस, व्हाई इज दिस लाइक. ओके, और ये है टाइम वैल्यू का कर्व. ये आपको कोई भी बुक टाइम वैल्यू कर्व नहीं दिखाता. It will show you the volatility, IVs का skew, smile, ये सब jargons में अभी आपको दे रहा हूं. I will teach you all that. But आपको इस तरीके से कोई नहीं सिखाएगा. This is what the trader only understands. जिसने काम किया है उसको समझेगा कि मेरा प्रीमियम क्यों चला गया, क्यों बढ़ रहा है, क्या हो गया, क्या मिला, इंट्रिंसिक मिला कि टाइम वैल्यू मिला. बिकॉज जब जब इंट्रिंसिक मिलेगा तो टाइम वैल्यू तो गिरेगा ही गिरेगा, फॉर श्योर, फॉर श्योर. टाइम वैल्यू इज द हाईएस्ट एट दिस पीक. अगर मार्केट इधर गया तो भी गिरेगा, अगर इधर गया तो भी गिरेगा. टाइम वैल्यू को तो गिरना ही है इफ इट चेंजेस फ्रॉम द पोजीशन. तो अगर मार्केट यहाँ पे है 19800, ओके, और दिस इज द कर्वेचर, ओके, ये 19800 का टाइम वैल्यू को खाली देखना है हमको. ओके, ओनली 19800 का टाइम वैल्यू. नाउ इफ द मार्केट गोज डाउन टू 19700 विदाउट डूइंग एनीथिंग, नो चेंज इन वोलेटिलिटी, नो चेंज इन टाइम, फिर भी दिस पीक विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो 19800 का टाइम वैल्यू तो गिर गया ना. टाइम वैल्यू चेंज नहीं हुआ है. सो ये एट द मनी 120 था, अब ये एट द मनी 120 है. लेकिन ये स्ट्राइक का जो ट्रेड हमने किया था उसका तो टाइम वैल्यू गिर गया. ओके, अगर ये 19700 की जगह 19900 चला जाता तो भी दिस वुड हैव कम हियर. लेकिन ये तो गिर ही गया ना, ये तो गिर गया ना. दिस इज व्हाई जब भी मार्केट मूव होगा तो या तो आपको इंट्रिंसिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम वैल्यू तो गिरेगा ही गिरेगा. सो टाइम वैल्यू कैन गो डाउन बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. अगर आपके स्ट्राइक से मार्केट चेंज हो गया, दूर चला गया, तो टाइम वैल्यू तो गिरेगा. हाँ, अगर आप राइट हो, आपका व्यू बुलिश है और आपने कॉल बाय किया है तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा. अगर आपने बुलिश थे और मार्केट नीचे चला गया तो कॉल का प्राइस गिर जाता है. बेसिकली वो टाइम वैल्यू भी तो गिर गया ना. सो ये टाइम वैल्यू को तो गिरना ही है बिकॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट. टाइम, I had explained you the concept of time. अगर रोज एक एक दिन के हिसाब से ये प्रीमियम तो गिरना ही है. अगर इधर चला गया तो वो इधर से गिरेगा, अगर इधर चला गया तो वो इधर से गिरेगा. टाइम के वजह से टाइम गिरता रहता है, टाइम वैल्यू गिरता रहता है. टाइम के वजह से प्रीमियम गिरता रहता है. मार्केट मूवमेंट के वजह से टाइम वैल्यू गिरता रहता है. एंड वोलेटिलिटी अप और डाउन, तो अप से इंक्रीज होता है, डाउन से डिक्रीज होता है. सो वोलेटिलिटी गोइंग डाउन विल आल्सो डिक्रीज दिस थिंग. सो देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग योर टाइम वैल्यू,
and time value is the only and only complicated part in options. Baki, there is no other thing which is complicated in options. Okay. Now, let's say there is one more factor कि अगर लेट्स से 5 दिन बाकी है तब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया या थोड़ा ऊपर गया, चलो तो यहां से इस तरह से आएगा. So if you had bought a call at 120 and this was let's say 19,800 and it became 20,000, okay, ये 120 का at least अब 200 पॉइंट्स in the money है. ये जो टाइम वैल्यू है कुछ तो 60 50 तो रहेगा. So let's say this is 50. Okay, and therefore this call becomes 250. Okay, so 120 का 250 हो गया. Now assume a case जहां पे 19,800 का था. Okay, this was the zero line and now टाइम चला गया तो on the last day मतलब लास्ट डे अगर पकड़ लो तो 19,800 का इस तरीके से दरवेचल था. So the call value on this day was let's say 40 rupees. Okay, now जब स्टार्ट करते हैं तो आपका जो प्रीमियम होता है उसका जो डेल्टा होता है उसका डेल्टा तो 0.5 ही होगा ना एट द मनी है तो. बट नाउ इट मूव्स टू 20,000. इवन इफ इट इज लास्ट डे मार्केट मूव कर देता है 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो क्या होगा? दिस पीक may come here या फिर it will become zero also, but let's assume कि वो 10 बजे तक ही it is like this. Okay, so time value तो almost zero हो गया. So the new time value is zero, but call में intrinsic value तो आ गया ना. So this call becomes 200. तो 40 का 200 हो गया, 40 का 200 हो गया और यहां पे वो 120 का 250 हुआ था. सो 120 का 250 होना और 40 रुपीज का 200 रुपीज होना, इसको बोलते हैं गामा बर्स्ट. आपकी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है. गामा बर्स्ट बेसिकली क्या है? गामा बर्स्ट का मतलब क्या है? इसमें टाइम वैल्यू है ही नहीं गिरने के लिए. तो गामा जो है वो इतना हाई हो जाएगा कि आपका डेल्टा अभी 0.5 है, थोड़ा आगे जाएगा 0.6 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा. इफेक्टिवली वो खाली आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा, टाइम वैल्यू तो है ही नहीं. टाइम वैल्यू गिर के कितना गिर सकता है? 40 रुपया गिर सकता है. राइट, 40 रुपए से ज्यादा टाइम वैल्यू ही नहीं है. सो 40 रुपए का 200 रुपीज तो मिलेगा बिकॉज दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू. ये 40 रुपए तो मैं जीरो ही गिन रहा हूं. This time value anyways I am going to consider zero, but there will be intrinsic value of 200 rupees, no? Intrinsic value आ गया, इसीलिए आपका जो at the money वाला कॉल था, that is now working like the future. और फ्यूचर जब इतना ऊपर फास्ट भागता है 19,800 से 2,000, तो आपका ऑप्शन भी तो उतना ही भागेगा ना. If you see actually it is gone up by only 160 points. लेकिन 200 पॉइंट्स के लिए 160 रुपीज कॉल का अप मूव इज अ बिग थिंग. इसीलिए लोग बोलते हैं रे गामा बर्स्ट हो गया. गामा बर्स्ट होने में कुछ नहीं है. मार्केट जब मूव करेगा तभी मूव करेगा. मार्केट को जब मूव करना है तभी करता है.
मार्केट ये नहीं देखता है कि आपका गामा कितना है, आप किधर बैठे हो, कहाँ पे है, क्या है. आई गिव यू दैट एग्जांपल इन द बेसिक्स. मार्केट तो कभी भी मूव कर सकता है, वो थोड़ी देखेगा एक्सपायरी है कि नहीं है. अगर वो ऊपर चला गया ऑन द फर्स्ट डे तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये 200 रुपीज इंट्रिंसिक है और 50 रुपया टाइम वैल्यू रेसिड्यूअल मिल रहा है ना. लेकिन अगर लास्ट दिन को जाता तो 200 ही मिलता. So when is your view going to be right? How much time is left till expiry? ये सब कुछ देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि what is going to be your profit. All these are the things in options, but nobody cares for this. क्योंकि actually में when you are a real trader, okay, I can assure you कि अगर आपने ये 40 रुपए का कॉल लिया है तो जैसे ही 60 रुपया होगा ना, अरे बेच बेच बेच, 80 हो गया तो गंगा नाली आ जाओ, डबल हो गया एक दिन में हमारा पैसा, गामा बर्स्ट, तो वो 200 रुपया हो जाएगा. 200 तक कोई रुकेगा ही नहीं, कोई रुकता ही नहीं है 200 तक. खुश होंगे हम लोग कि मैंने 40 में लिया था वो 200 हो गया. अच्छा, तूने 160 रुपया कमाया क्या? नहीं नहीं, मैंने तो 60 रुपए में ही बेच दिया था. 40 का 60 गया, बहुत खुश, लेकिन मैंने एंट्री बराबर मारा था ना. 40 का 200 हो गया था, मैंने तो बराबर एंट्री मारा था, एग्जिट रॉन्ग मारा. इफेक्टिवली सब कुछ साथ में देखा जाता है. अपने आप को मनाने का है खाली. यू हैव टू जस्ट कीप योरसेल्फ हैप्पी. हाँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, बस. उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, उससे ज्यादा कोई कुछ खुश नहीं होने वाला. 40 का 200 रुपया मैंने तो नहीं देखा है किसी को करते हुए इंट्राडे में. ओके, so this is what covers your option pricing. The three factors that affect your option price, और उसका हमने एक डायग्रामेटिकली देखा है कि कितना कैसे इम्पैक्ट होता है. एंड इफ यू वांट टू डाइसेक्ट इट, हमने डेल्टा गामा थीटा वेगा भी देखा था. वो डेल्टा गामा थीटा वेगा के वजह से भी इफ आई कैन कैलकुलेट इट, इट विल गिव मी द सेम आंसर. इट विल गिव मी द सेम आंसर. मैंने यहाँ पे बहुत ही क्रूड वे में आपको दिखा दिया कि ये प्राइस होगा, ये प्राइस होगा. Okay, I just gave you crude ways of looking at it, but obviously it will give you the exact point to point effect, provided आप तीन चीज प्रॉपरली गेस करोगे. तीन चीज को प्रॉपरली गेस करना पड़ेगा. मार्केट कितना कितना ऊपर या नीचे जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ द मार्केट कितने पॉइंट से. ओके, खाली डायरेक्शन बोल के कोई फायदा नहीं है. कितने पॉइंट से, कब तक, how many days, and in that how much will be the volatility. Okay, how much will be the volatility. सर विद्यानंद सर, आपका जो सेशन का जो नाम है वो मुझे पता है कि क्या सेशन का नाम है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम. लेकिन इफ देयर इज समथिंग पेंडिंग, ये कोर्स है. ओके, ये एक सेशन नहीं है, हमने एक कोर्स किया है, तो वो कोर्स को थोड़ा आगे पीछे होगा ही होगा. और अगर आपको सिर्फ वही सीखना है तो यू कैन राइट टू अस ऑन द कम्युनिटी पेज एंड वी विल आंसर ओनली दैट फॉर यू, सो दैट आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा. आपको पूरा कोर्स नहीं करना पड़ेगा उसके, राइट. सो आपको जो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम सिखाना है उसके लिए 2 घंटा लगता नहीं है. okay? उसके लिए 2 घंटा नहीं लगता है, इसीलिए अभी तक वो नहीं किया. Yes, today's session was that and we will take care of that, but वो पूरा 2 घंटा उसके ऊपर बात नहीं कर सकते. Okay, so we will wait for that. Okay.
So I have already given to you about what will be the impact in the end. Okay, हमने बेसिक्स में ही हमने कुछ स्ट्रेटजी सीख लिए हैं. हम एडवांस स्ट्रेटजीज के लिए जब एडवांस स्ट्रेटजीज पे आएंगे तो उस दिन हम सीखेंगे एंड देन वी विल सी हाउ इट इज इम्पैक्टेड इन द लाइव मार्केट. ओके, अभी कॉन्सेप्चुअल सीख लो. एडवांस सेशन है तो थोड़ा टेक्निकलिटीज तो होगा ही. ओके, अगर प्रैक्टिकल होता है तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो इट कैन नेवर बी सो कॉम्प्लेक्स. अगर प्रैक्टिकलिटी में अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो कोई ट्रेड ही नहीं करेगा ना. सो इट इज नॉट complex by its nature. We are creating it in a complex way. We are understanding it in a complex way. So इसका जो minor details है उसके लिए हम जा रहे हैं and that is why it looks complex. But markets cannot be complex. अगर complex है तो कोई ट्रेड ही क्यों करेगा? It is not like a cryptocurrency जिसका कोई माई बाप नहीं है, कौन है उसका वो कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है ये. It is stock market. In the end, it is for everybody. How can it be so complex? Yeah. So now, once we have understood how the option price will move, okay, now we can do a lot of things. This is strategies. लेकिन strategies के लिए, I want you to be fresh in your mind, and I want you to contemplate whatever we have said today. तो जैसे ही इसका आप आज रात को सो जाओगे, कल सुबह फ्रेश होके आओगे तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी मैंने समझाया है एंड यू लुक एट इट इन द लाइव मार्केट एंड यू विल सी इट एग्जैक्टली हैपेंस एज आई टोल्ड यू. ओके, एंड देन आप उसमें स्ट्रेटजी सीखोगे तो आपको इमीडिएट समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. टुडे वी हैव डन अ हेवी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्राइसिंग. तो वो थोड़ा समझने को, थोड़ा ग्रास्प करने को टाइम लगता है. सो वी विल वेट फॉर दैट. ओके, नाउ कमिंग टू दीज पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम. ओपन इंटरेस्ट open interest is a concept by which we are trying to find out how many trades are open, because there are many trades that happen. Okay, and that trades, the number of trades is gathered and understood as volume. So volume is another thing and open interest is another thing. Always open interest will be a subset of the volume. क्योंकि अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाय भी किया और सेल भी कर दिया आज ही, तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम ज्यादा होगा बट ओपन इंटरेस्ट में नहीं दिखाएगा. सो व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? लेट्स से अ पर्सन ए बाइज 50 shares, okay, and B sells 50 shares, okay. So volume कितना हुआ and open interest कितना हुआ? Volume is 50 shares and open interest is 50 shares, correct? Now tomorrow B buys 50 shares and C sells 50 shares. अब क्या हो रहा है कि बी ने पहले बेचा था, अब वो बाय कर रहा है. प्रॉफिट में या लॉस में डज नॉट मैटर, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म. ओके, सो यहां पे अब दो पार्टीज कौन खड़ा है जिसका ओपन इंटरेस्ट ओपन है? ए और सी. ठीक है, बी तो बीच में से निकल गया, राइट? सो वॉल्यूम क्या है इसमें? 50 शेयर.
बट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 50 ही रहेगा, बिकॉज अभी भी ये बीच में से निकल गया, इसको खाली इसने रिप्लेस कर दिया। सो सी आ गया बी की जगह पे, दैट्स ऑल। नए शेयर्स किसी ने बाय नहीं किए। सी इज अ न्यू प्लेयर, but B has exited and C has replaced him. So open interest does not change. But if then there is a D who buys 500 shares and there is an E who sells, let's say 300 shares, and there is an F who sells 200 shares. Okay, D ने 500 बाय किया, E ने और F ने सेल किया, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो नया 500 हो जाएगा, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो 550 हो जाएगा। ओके, सो ओपन इंटरेस्ट अब 550 क्वांटिटी का है। सो देयर आर 550 शेयर्स जिसने या तो बाय किया है या तो सेल किया है। ओके, सो देयर पोजीशन इज ओपन एंड देयर इंटरेस्ट इज स्टिल ओपन। ओके, इसके वजह से वी जस्ट लुक एट दिस कि ये 50 से ओपन इंटरेस्ट 550 हो गया, which means there is a huge quantity which has been traded. Now please pay attention on this. Somebody has bought, but at the same time, if it is a trade, somebody has to sell, isn't it? अगर कोई बाय करता है तो किसी को सेल करना ही पड़ेगा ना, तो ही तो ट्रेड होगा। अब वो नया बंदा है कि पुराना ही अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है, वो अलग बात, बट किसी को ट्रेड तो करना पड़ेगा ना। सो व्हेन यू आर बाइंग, somebody is selling, but with this change in open interest from this to this, a huge change in the open interest, if you start taking a view, it is based on the assumption, it is based on the assumption that either this guy is very powerful or these guys have more understanding of the market. I don't buy that argument. क्योंकि कॉल अगर बाय किया है तो कॉल सेल भी किया है, अगर पुट बाय किया है तो पुट सेल भी किया है। अगर कोई बाय करता है तो कोई सेल भी करता है, तो बायर ज्यादा अकल वाला है या सेलर ज्यादा अकल वाला है? I don't buy that argument. And there will be enough people and there you can try that. I have no problem with that. Okay, आपको वो ठीक लगता है आप करो, मेरे को जबरदस्ती वो सिखाना नहीं है जो मुझे नहीं समझ में आता। Okay, what people do is, इसका जो इम्पैक्ट है कि अगर ये लेट्स से मार्केट 19800 है, okay, and they will see कि वॉल्यूम कहाँ पे है, ऊपर इंटरेस्ट कहाँ पे है, and if they say let's say 20,000 पे, okay, there is a huge overbid. अज्यूम कर लेते हैं कि 20,000 पे लोगों ने कॉल बेचे, बहुत सारे कॉल बेचे हैं। यस, ऑब्वियसली तभी तो ओआई हुआ। ओके, कॉल बेचे हैं तभी तो ओआई हुआ, लेकिन कॉल बाय भी किए हैं, कॉल बाय भी किए हैं। बट व्हाट पीपल अज्यूम इज दैट यहां पे एट दिस स्ट्राइक this will become a resistance, this will become a resistance, and therefore they also go and sell 20,000 का कॉल। अब आप समझ नहीं रहे हो कि इसमें कौन से प्लेयर्स ट्रेड करते हैं। देयर आर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, जो ये कॉल तो सेल करेंगे इसका,
इसका कॉल सेल करेंगे, लेट्स से उन्होंने 10,000 कॉल सेल कर दिया, 10,000 कॉल सेल कर दिया तो आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसने ऑलरेडी 5,000 फ्यूचर्स बाय करके रखे हैं, वो आपको कहाँ मालूम है? डू यू नो? अगर ये कॉल बेचा है तो इसका जो भी डेल्टा होगा वो उसने इसमें से न्यूट्रल करके रखा है बाय बाइंग द फ्यूचर्स एग्जैक्टली, तो आपको कहाँ मालूम है? इज दिस गोइंग टू कम इन योर ओपन इंटरेस्ट? इज दिस गोइंग टू कम इन योर ओपन इंटरेस्ट व्हेन यू लुक एट द स्ट्राइक प्राइसेस? ये तो फ्यूचर्स मार्केट में लिया है, चलो फ्यूचर्स नहीं, उसने स्टॉक ही ले लिया तो आपको पता चलने वाला है। नाउ ही हैज बॉट सोल्ड अ कॉल, ओके, डज ही वांट के मार्केट नीचे जाए? डज ही वांट के मार्केट नीचे जाए? नो, he has just eaten this premium, but he wants the market to go up because he has bought the actual futures. Okay, so ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे किसी ने बेचा है तो बस ये मंदी में ही है, और यहाँ पे अगर किसी ने पुट बेचा है तो वो तेजी में ही है। And the worst thing is not taking a view about OI. I have no problem with taking a view on OI. Okay, that can be used as an indicator to look at the markets के मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या रेंज में रहेगा, वो सब आप करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। As a retail trader, मेरा प्रॉब्लम with looking at this as an indicator is only one, कि अगर आपने ये कॉल बेचा है let's say at 30 rupees, okay, you have sold it, and now अगर मार्केट ऊपर गया ना, अगर मार्केट ऊपर गया ना, तो आप ऐसे फंसोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं एग्जिट करूं कि मैं रहने दूं, बिकॉज दिस कॉल वुड बी 120। 30 रुपीज खाने के लिए आप ऑलरेडी 90 रुपीज के लॉस पे बैठे हो, अब आप क्या करोगे? इसमें से एग्जिट ही नहीं मिलेगा। Then you will try to find the adjustments which I will teach, but वो adjustments are going to save your loss, they are not making it into profit. Okay? Losses तो होगा, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन जब आप OI देख के अगर काम करोगे, okay, and this is only my experience, you may have a different experience, I don't have to disagree with you and you don't have to agree with me. But whenever you look at OI and do a trade based on that, okay, if you are wrong, तो ऐसे फंसते हैं कि वो निकल ही नहीं सकते उसमें। इसमें कमाना क्या है और घुमाना क्या है? At this point, you will not want to sell it, or you would not want to square it off, neither you want to keep it. Let's say it goes to only 19,550. So 19,950 गया था बस, 19,950 गया, तो is your view wrong or is it right? Because when you had said sell call of 20,000, when you had said sell call of 20,000, what was your view? 20,000 के ऊपर नहीं जाएगा, गया क्या? गया नहीं गया ना? यू आर राइट, बट आपका 30 रुपीज 120 रुपीज हो गया, अब क्या करें? यू आर राइट इन योर व्यू, बट अब इसमें से एग्जिट करूं कि नहीं करूं? मेरा व्यू था कि 20,000 नहीं जाएगा, नहीं गया, लेकिन ये पॉइंट पे मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि शुड आई वेट टिल द एक्सपायरी or should I exit at this point? क्योंकि on the expiry I will get this 30 rupees if my view is right. अगर यहीं पे एक्सपायर भी हो जाता है तो भी मुझे 30 रुपीज मिल जाएगा, लेकिन आज तो इसका प्रीमियम 30 का 120 हो गया ना, मार्क टू मार्केट तो लॉस आ गया ना, मार्क टू मार्केट लॉस आ गया, मतलब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा।
एंड पीपल से ऑप्शंस में मार्क टू मार्केट नहीं होता है लेकिन मार्जिन बढ़ जाता है, तो मार्जिन देना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। बेसिकली ये डिफरेंस जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। नया पैसा दू एंड वेट टिल एक्सपायरी कि फिर एग्जिट इट ओवर हियर। व्हेन यू एग्जिट क्या होता है अपने साथ, जब हम एग्जिट करते तो वापस then we blame operators, we blame people, we blame the stock market, we blame anybody। क्योंकि ये OI जो है ना, ये किसने बिल्डअप किया वो तो समझो। आपकी और मेरी तरह नेकेड ट्रेडिंग थोड़ी करते हैं ये लोग। मोस्टली दिस इज डन बाय प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को कोई भी दिन अपना पोजीशन ऐसा नेकेड करके छोड़ने को अलाउड है क्या? कोई भी ऐसा करेगा क्या? 10,000 कॉल बेच के जाएगा क्या? घर पे सो सकता है क्या वो? कल सुबह गैप अप हुआ तो उसका क्या हालत होगा? He has to hedge it। थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, बट उसको हेज तो करना ही पड़ेगा। सो ये OI बिल्टअप ऑन दिस स्ट्राइक मैं शो यू के इस स्ट्राइक पे बिल्टअप है, लेकिन उसने दूसरे मार्केट में क्या किया है वो थोड़ी पता है अपने को। स्टॉक्स लेके रखा होगा, बास्केट ऑफ स्टॉक्स लेके रखा होगा, निफ्टी ETFs लेके रखा होगा, निफ्टी फ्यूचर्स लेके रखा होगा। हाउ विल वी नो क्या लेके रखा है? बैंक निफ्टी लेके रखा होगा, बैंक निफ्टी का कॉल लिया होगा, इसका कॉल बेचा होगा, ऐसा भी करते लोग। तो हमको थोड़ी मालूम है कि ये इसने क्या किया है, ये ह्यूज OI क्यों बिल्टअप हुआ है। I personally don't follow this indicator, but if you want to follow this, please look at one more indicator with this। Okay, जब भी आपको ये ह्यूज OI को देखना है, चेंज है, OI चेंज नॉट OI चेंज अगर देखना है तो also look at the IVs। If the IV is going up and the OI is increasing, okay, that means buyers are more aggressive of buying that option। उसका मतलब क्या है? अग्रेसिव का मतलब क्या है कि 100 रुपया है, चल 102 करके दे। They are aggressive in buying, and when they are aggressive in the price, it will show in the IVs going up। Okay. So when you are looking at OI built up, at the same time IV is also going up, that means buyers are more aggressive। But when the IVs are going down or if they are flat and there is a huge OI built up, that means option sellers are selling it more। Okay, so देखो बाय और सेल जब दोनों होता है तो हमें क्या पता कि इसका पलड़ा भारी है कि इसका पलड़ा भारी है। So the indicator that will tell us who is more aggressive is IV। So if you look at the IV along with the OI, then yes, you are right. You may be right। Okay. IV means implied volatility। Okay. No, there is no range for IV to be considered because IV has to be looked at relative terms पे। कि अभी absolute terms में अगर देखेंगे तो 8% is low, right? 8% is low, but market में काफी टाइम से 8% चल रहा था and market made a new high। Okay, now you will see it will be somewhere around 10%, 11%। That is not high, right? Because वो 8 low करके high आया है। अब यहां से अचानक से 14 हो जाए तो yes, I will say it is high। Where to see both? Obviously on our up stocks। यहाँ पे देख लो, ये है हमारा up stocks का ऑप्शन चेन। I will just zoom in for you। Okay, so ये है आपका स्ट्राइक, ये है OI, ये है वॉल्यूम एंड दिस इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के साथ आप देख लो कि यहाँ पे OI का बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट विल टेल यू हु इज मोर एग्रेसिव। अगर ये IVs बढ़ रहा है, दैट मींस द बायर्स आर मोर एग्रेसिव इन दैट ट्रेड।
and if IVs are going down or it is flattish, then the sellers are more aggressive in this trade. Okay. MV sir, I am not able to answer that kind of a question because I have not learnt it that way. So obviously, some practical trader must have told you from his practical experience. So I am no one to tell that he is wrong or he is right. Okay, but मेरा जो मानना है, मेरा जो experience है, I have a feeling कि open interest से देख के अगर कोई position हम लेते हैं, तो उसमें जब फंसते हैं तो बहुत गंदा फंसते हैं. Okay, फिर उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. As long as it is working, it is fine. But if you see, and there will be a lot of people who will talk about this. Okay, जब मार्केट ऐसा भागता है ना वन साइड, you have seen the market moving, right? So अगर मार्केट मूव करता है, जब इस तरह से अज्यूम के ये है ही नहीं. ओके, अज्यूम के ये है ही नहीं. ओआई बिल्टअप कहाँ पे दिखाएगा? ओआई बिल्टअप कहाँ पे दिखाएगा? यहीं पे, ये एक दो स्ट्राइक पे, और फिर सीधा गैप अप खुलता है. हाँ, सीधा गैप अप खुलता है. फट 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 ट्रैप हो जाओगे. एग्जिट करने को ही नहीं समझेगा कहां पे एग्जिट करना. जस्ट बिकॉज यहां तक आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, सब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रेड व्हाइट कैंडल्स दे रहा है. अचानक से जब ये जुम 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 करके चार बड़ा कैंडल दे देगा विद गैप ऑफ ओपनिंग्स, हालत खराब हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट. OI in NSE option chain and upstocks does not match. Okay, I will tell it to my team over here. I have no clue about that. Options buyer and option sellers are strong means call and put. Is it, sir? No, no. So as I told you, if I want to be bearish, okay, I can buy a call, I can buy a put or sell a call. Okay, so ऐसा कुछ नहीं होता है कि buy put करने से ही ज्यादा profit होता है. If you think कि price ज्यादा है या उधर तक market नहीं आएगा, and I will teach you another strategies when I will talk about volatility trading also. Okay, तो वो थोड़ा बाद में आएगा, but I'm just answering your question right now. कि it is not that when you are selling options, okay, you may have a view on the direction of the market only. You may have a view on the IVs also. Let's say, for example, if this is the current market price and 19,700 ka call you are getting at 78 rupees. Okay, for some reason, if this market remains the same, okay, if this remains the same and this premium is, let's say, 278, तो क्या आप इसको बेचोगे नहीं? आप फिर भी इसको बाय ही करोगे? You will not buy. If you are bearish, are you going to buy this put? Obviously no, because if this is 278, this will be almost 278 or 280 or 230, 290. So are you going to buy a put at 290? You would rather sell this call at 280, 278, right? So ऐसा कुछ नहीं है कि because आपका व्यू ऐसा है तो आपको यही ट्रेड करना चाहिए. Okay? When you are looking at advanced strategies, nobody is going to simply just sell this call and wait for the expiry. Sell a call, they will hedge it with either buying a buying a call or of a different strike price, or buying some futures, or buying the stock, something you will do. Can we square off sell order in the same day? Of course you can. Of course you can. IV and OI increases, then buyers are increasing. Yes, Kuldeep, yes. Repeating the question from basics. Does
theta erodes during market hours? No. I'll give you the answer to it. Whether it does or no, we don't know. Okay, but I'll tell you what happens. अगर प्राइस आपका 100 है, I told you A into B into C on D into E, ऐसा कोई तो भी गंदा सा फॉर्मूला है. Okay, now in this is your strike price, this is your spot price, this is your interest rate. ये बेसिकली फ्यूचर के लिए. ओके, स्पॉट प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट हम तो सीधा फ्यूचर ही लेते हैं. यस्टरडे आई हैड एक्सप्लेन्ड दैट. ओके, नाउ दिस इज द इंपैक्ट ऑफ टाइम एंड दिस इज द इंपैक्ट ऑफ वोलेटिलिटी. ओके, अब होता ये है, बिकॉज वी हैव मेड दिस कांस्टेंट as to one calendar day. Okay. No video for everybody? Just let me check. Is it okay now? Okay, fine. So I was saying कि ये जो आपका ब्लैक एंड शोल्स मॉडल में हमने जो फॉर्मूला में if you put all these things, there is this time and there is volatility. Okay, now टाइम के वजह से we have made it constant one calendar day. Okay, तो जो भी टाइम का डिक्रीज आएगा वो तो कल सुबह ही दिखेगा आपको. Okay, वो खाली कहने का मतलब, कहने का चीज है कि अगर ये 100 से if it goes to 95, अगर वो 100 से 95 जाता है इंट्राडे, we allot all the decrease to this particular factor. कि ये IV गिर गया इसके लिए ये 95 हो गया. लेकिन कल सुबह अगर ये 93 रुपीज हो गया तो दिस वी एट्रीब्यूट टू थीटा व्हिच इज एक दिन का इम्पैक्ट. गॉट इट? सो जो थीटा का इम्पैक्ट है वो हमने कांस्टेंट करके रखा है. उससे ज्यादा हुआ तो आईवी ने बढ़ा दिया, उससे कम हुआ तो आईवी ने घटा दिया. वी आर वेरी स्मार्ट. वो अब मुझे ये स्टोरी याद आ रहा है. वो अकबर बादशाह ने वो बिरबल को बोला कि दिल्ली में कौवे कितने हैं ढूंढ के लाओ, तो उसने कोई भी एक नंबर दे दिया. अगर ज्यादा है तो बाहर से आए हैं, अगर कम है तो हमारे यहाँ के बाहर गए हैं घूमने के. राइट? तो यहाँ पे भी वही है कि अगर ये इसका प्राइस होना चाहिए, अगर कम है तो इट इज बिकॉज वोलेटिलिटी ने कम कर दिया, अगर इससे ज्यादा है तो वोलेटिलिटी ने बढ़ा दिया. थीटा तो अपना काम दूसरे दिन ही करेगा. थीटा तो अपना काम दूसरे दिन ही करेगा. तो थीटा तो ओवरनाइट ही गिरेगा. ओके, और ओवरनाइट भी गिरा तो एक्चुअली ये 93 होना चाहिए, दूसरे दिन आओगे तो वो 96 होगा. तो 96 हो गया तो क्या बोलेंगे कि ये तो 93 होना चाहिए था, आईवी ने बढ़ा दिया. सो ऑल द ब्लेम गोज टू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. तो बाकी सब तो एकदम डिसिप्लिन मैनर में काम करते हैं. एक यही है नटखट जो कहीं पे भी कुछ भी कर देते हैं. एंड दैट इज व्हाई वोलेटिलिटी को प्रिडिक्ट करना
volatility को समझना is a huge course by itself. It is not only simply के यही है, यही ऐसा ही होगा. It is not formula based. All right. So this is what is in store for you. I hope कि आपने आज काफी सारे टेक्निकलिटी सीखे हैं. ओके. एंड जो आपका मेन फंडा है ऑप्शंस प्राइस का, जो हमने बेसिक्स में भी किया था, लेकिन बेसिक्स में हमने कुछ बेसिक लेवल पे किया था, और आज हमने बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल पे उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लिया है. You now know why there is a gamma, because there is a curvature. Okay. If it was a straight line, there was no need for gamma. But there, because it is a curvature, it is gamma is needed. Okay. And वो curvature is the most important thing, because वो curvature is the time value curvature, and time value का curvature ही predict करना बहुत मुश्किल है. Because time value के ये जो मार्केट का जो कर्वेचर होता है, टाइम वैल्यू का कर्वेचर होता है, वो यहाँ से इस तरह से ओके, वो आगे गया मार्केट तो वो इधर से स्टार्ट होगा. The second day it will start from here. The third day, if the market goes down, it will start from here. Okay, this is the third day. This is the 4 days to expiry. This is 5 days to expiry. Okay. अब जब आपका 2 days to expiry है, okay, लेकिन वो टाइम पे मार्केट इतना गिर जाता है, okay, कि आपका जो प्रीमियम है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है. Now there are only 2 days to expiry. But because मार्केट इतना सारा गिर गया कि आपका वोलेटिलिटी बढ़ गया. Now there are 2 days, but फिर भी वोलेटिलिटी ने पूरा प्रीमियम को उठा दिया. Okay. Now there is 1 day, maybe थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, and then on the last day there will be zero. कैसे भी करके उसको जीरो तो आना ही पड़ेगा. तो 2 दिन में वो बहुत सारा गिरेगा. Okay. लेकिन just because आईवीज बढ़ गया है, अगर आपने ऑप्शन सेल करने को ट्राई किया और उधर से और नीचे चला गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू घुस जाएगा. So we are talking only about the time value over here. This is only the time value curvature. Direction will determine the intrinsic value. Okay. So this is what I think, if you contemplate on this thing today, आप उसको properly समझोगे तो आपको you will appreciate the fact कि time value of an option कितना impactful होता है. Gamma is due to the curvature. Curvature is not due to gamma. I'll explain it tomorrow. How Y value shows selling only? No, it shows both. OI in put case also it is the same thing. कौन buy करता है, कौन sell करता है put को. If you buy a put and you sell a put, there will be a no OI, right? So अगर एक A ने buy किया है put और B ने sell किया है put, तो it will be the same, because मैंने यहाँ पे क्या buy किया है वो तो बोला ही नहीं है. When I was explaining this, okay, मैंने यहाँ पे shares लिखे, लेकिन अगर मैं option बोलता तो it is the same thing. मतलब यहाँ पे shares की जगह put option लिख दो, it is the same thing. ऑप्शन बायर का दुश्मन थीटा है. यस, you will not get a PDF for this lecture. How to get cues from India Wix tomorrow. ठीक है. What exactly is momentum? How to identify that? For that we have to look at technical analysis. Options don't tell you momentum. Okay, they will tell you the aggressiveness of the buyers and sellers through the IVs, but momentum नहीं दिखाता options. Okay. How to see OI and IV?
ग्राफिकली हमारे अपस्टॉक्स के ऐप पे मिल जाएगा. सो आई टेल और यू नो Ronak to give you a demo of the app also. Maybe on Friday we can show you the app जहाँ पे we can show you कि कहाँ पे क्या होता है everything. Is this happening in stock options? Yes, this happens in the stock options. How to open trading view chart? I think Ronak will handle it. IV range, there is no range. Okay, there is no range. I would be wrong if I teach you wrong things, right? So I'm telling you there is no IV range. मतलब अगर आप खाली थोड़ा साल मार्केट में रहोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि IV क्या से क्या हो सकता है. एंड इवन डेसिमल पॉइंट से कितना इम्पैक्ट हो सकता है ऑप्शन प्राइस पे. सो आईवी का कोई रेंज कुछ नहीं होता. रिकॉर्डेड क्लास ऑब्वियसली यू विल गेट आफ्टर दिस सेशन. तो आपको यू जस्ट क्लिक ऑन द सेम लिंक एंड यू विल गेट द रिप्ले. बट जस्ट क्लिक आफ्टर सम हाफ एन आवर 1 आवर बिकॉज ये रिप्ले जनरेट होने को टाइम लगता है. अरे बहुत फास्ट जा रहा है. आई डोंट नो how to take a view on market accurately. बोलो इसका आंसर मुझे आता तो और क्या चाहिए था मुझे. Someone of us who has started during this series missed out on strategies. So there is no problem. We are going to do these courses on a regular basis. Okay, and these are given to you free of cost. So next जो हम अगस्त में चालू करेंगे, okay, maybe on 30th July or something, जो हम चालू करेंगे वापस बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सो एवरी मंथ वी विल हैव 2 बेसिक कोर्सेज एंड 1 एडवांस कोर्सेज. तो आपको बेसिक कोर्स अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज अटेंड इट नेक्स्ट वीक एंड देन अगेन द वीक इन द एंड you can attend the advanced course also again. Okay, so not a problem at all. IV flat ENA कौन सा है? Again the same thing. एवरी डे आपको देखना पड़ेगा. ओके, मैं नंबर दूं उससे कुछ नहीं होगा. यू हैव टू लुक एट इट एवरी डे. यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट आईवी चेंज. ओके, इस तरह से आईवी का अजम्पशंस नहीं लिया जा सकता. सो मैंने अभी आपको बताया कि आईवी कितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है. अगर ऐसा आंसर्स मांगोगे तो मिलने वाला नहीं, और मिलेगा किसी ने बता भी दिया तो भी वो रॉन्ग ही होगा. सो डोंट गो बाय सच आंसर. I think I have explained to you what is the meaning of OI in the put case. Vishnu, yes, you are right. Okay. So for that we have some technical indicators जो मैंने basics में समझाए थे. So Krishkant, I can invite you for the basics course. उसमें we take a few technical indicators जिससे हम view लेते हैं. Okay, so it will be covered over there. But obviously technical analysis के ऊपर हमारे जो expert है, जो यहाँ पे director भी है, so he is going to take. So Milan sir करके है, Milan is taking sessions on technical analysis. आप उसी पे देख सकते हो. टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स अभी चालू हो रहा है. ओके, तो वो भी कंटिन्यूसली चालू ही है. ओके शुभम, आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टूड समथिंग. India VIX plays important role to trade intraday. We will see about it tomorrow. कुछ बात मेरे सर से ऊपर निकल गई. हाँ, तो मैंने जैसे बताया नेक्स्ट वीक हम वापस बेसिक कोर्सेज स्टार्ट करेंगे. Which point are that to know the directions, change your view? हाँ, वो भी हम टेक्निकल इंडिकेटर से ही सीख सकते हैं. ऑप्शन से वो नहीं सिखा सकते. Shivani wants to know how to become master in trading. मेरे ख्याल से उसका एक ही आंसर है, थोड़ा पैसा लूज करते रहो तो आपको मार्केट ही सिखा देता है सब कुछ. ओके, थैंक यू very much for your time today. See you tomorrow with a new topic. Yeah.